With this, I also want to request you all that there are 3 ground rules we will follow during whenever you are speaking on the stage. That is that we do not talk about sex, religions, and politics. Keeping that in mind, I will request our presiding officer, Toastmaster Jyoti, to come on a dais. Thank you, Team Pratik. Good evening and namaste to everyone. I'm very happy to see all of you here. And there were some glitches, but all of you get the patience and all smiling faces. And today is a very important day for VTM family. VTM is Vadodara Toastmasters Club. We call it as a VTM family because we consider it as a family and family members. And what we are working for everybody's development. We are learning and growing together. And this is the day of we are celebrating a 300 meeting. And this is the day when we are celebrating that 300 efforts, 300 meetings efforts and efforts of each and every person have contributed to the club. So I'm very happy that all of you are part of this event. And it's our pleasure that PQD, Program Quality Director, TN Sunita have joined us. She will begin the event with her address. So please welcome her with a big round of applause. TN Sunita, over to you. Am I audible, visible? Yes, yes. Yes. Okay, great. Good evening to fellow Toastmasters, guests, and dignitaries present here, and a special hello to Neha. Hi, Neha, I saw you walk into the room. She and I have had the pleasure of working together for the district as division directors, and it was fun. I believe if you all have attended our joint conferences, you would know how much fun it was. So special hi to Neha. I come before you today with a heart full of joy and a genuine sense of honor as we celebrate a momentous occasion, the 300th milestone meeting of Vadodara Toastmasters Club. What an incredible journey it must have been to each and every Toastmaster connected to the club right from the time when it was chartered. Now, in these 300 meetings, I am sure you have witnessed growth, shared countless stories, and honed every member's speaking and leadership skills. Each meeting definitely has been a stepping stone, a building block in the foundation of your collective success. I have had the pleasure of working with Yogesh and Pushkar, who are your current members, when they served as area directors as well, which goes on to prove that this club is not only focusing on communication skills of their members, but also encouraging them to serve the district. Now, for next term, I am hoping to have more entries for area director nominations when we send it out from your club. I believe it is right for me to say that from the novice first-time speakers to the seasoned evaluators, every participant here has contributed to the vibrant tapestry of this club. It is the dedication, commitment, and unwavering support from each one of you that has brought Vadodara Toastmasters Club to this significant milestone. For many of you on this journey, you must not forget the friendships you forged, the laughter shared, and the challenges that you overcame. This club has become a nurturing ground for personal and professional development, a place where you've not only conquered the fear of public speaking, but also discovered the power of your voices. In reaching 300 meetings, you have proven that persistence, passion, and a supportive community can transform dreams into reality. Today, let's put our hands together to the countless speakers who have graced the stage, the dedicated leaders who have steered us forward, and the members who make Toastmasters family a home. Thank you to every ex-com from the club's inception to the current officers, Jyoti, Ravi, Sakshi, Udit, Jignesh, Kuldeep, and Pratik.
As a program quality director, nothing gives me delight to be at a club which is more focused on achieving educational goals to achieve their DCP target. You have already achieved 4 out of the 6 educational goals and already eligible to be Select Distinguished Club, and we're still just in December. We have 6 more months to go, and I'm sure that you're going to become President's Distinguished Club. Here's to the next 300 meetings, filled with even more growth, laughter, and triumphs. May the club continue to be a beacon of inspiration, empowering each member to find their voice and share their story and start their leadership journey. I would also like to take this opportunity and thank Toastmaster Neerav, who is the current area director of the club, and to the current division director, Distinguished Toastmaster Nishant Mehta, for guiding the club and the division. On behalf of the trio, District Director Hardik Shah, Club Growth Director, Distinguished Toastmaster Joydeep Bhaumik, and me, congratulations once again to Vadodara Toastmasters Club on this remarkable achievement. Thank you, and back to you, Jyoti. For motivating us and lots of encouraging words. Thank you so much. It means a lot. Moving forward to the event, may I request PM Yogesh to take the dais and continue with the event. Let's welcome him. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Welcome to this extraordinary meeting celebrating the 300th meeting for our club VTM. This meeting is something which needs to be remembered about. I still remember my joining days when I joined this club 2.5 years back, when I was new to India, trying to join a club, trying to find out which are the clubs in Vadodara which will help me in growing and continuing my Toastmaster journey. I identified 2 clubs that time, Toastmasters Club of Vadodara and VTM. I just, as a call or courteous call, I tried to reach out to the VTM, not by selection, but by choice. I connected with then President Toastmaster Baiju. The first connect which I had with Baiju has led me not only to join this club, but to be present in front of you now, celebrating the 300. That's the power of our VTM. That's the relationship which VTM members makes. That's the testament which we have and the confidence which we have, which we put in to this club. We are not here collectively sitting here as a members, but we are all here as a witnesses to the journey which VTM has taken from its very humble roots to this level, where the theme of the day is correctly encapsulating it. That's nothing but you are starting with a humble beginning and reaching to the extraordinary heights. And even after reaching the extraordinary heights, we are still being on the ground. We are still humble. Like our PQD, Sunita said, that VTM has been already contributed and always been contributing to the entire district with lot of leadership. That shows another testament which VTM has. The members of the VTM are not only becoming a good communicator, but they come up and become a good leader who not only gain experiences, but they want to share their experiences with others, pass on their knowledge with others so that everybody can grow together. That's the emotion, that's the category, or that's the thing which the VTM builds up in a network. That's how the VTM has been built up. It was an adventurous journey for all of us, but still we have reached here. I believe every one of you as a member who has been offline and connected online comes with a different route, different backgrounds, different stories, and different needs to this club. But once you are part of this community, you share together the common vision of gaining the experience, giving the experiences to make everyone grow together, to learn from each other's strengths and try to make our weaknesses our strength so that normally we can perform better and we can grow better. Not only in a club meetings or the Toastmasters meeting, but in our personal life and our corporate life too. There may be hundreds of stories which I can personally share, which helped me in progressing in my corporate career, which gave me the confidences to present something to someone who is more critical and important in my corporate career.
It helped me in connecting with my family also. I became a better listener. That's what my wife says. I become a better communicator with my parents, with the relationship which I have because of what the skills I am learning in Toastmaster or specifically in the VT. And I'm sure you all must be gaining through that. So this is not only a 300th meeting which we are trying to celebrate, but this is a celebration of achievement of all of us as a collective, which makes us better. So let's start the celebration of it. To start with, today, as our theme says, starting humble and we're going to better, we have two esteemed guest speakers today who are the testaments and pinnacle of showcasing this exact theme in their personal life. They also started with a humble background to reach to a level where everybody will dream of it. But still being there, they are still on the ground, connected well with the people, giving back what the society has given to them. And that's exactly what we built up in our DNA. To start with, I will start with our first guest speaker. She is a socialist, she is an influencer. Not only that, she has gotten lots of awards. To name few, she was Mrs. Unity World Asia. She was Mrs. Gujarat. She is a Miss Vadodara. She is Garba Queen, and not only that, she is a Rasoi ki Mahant and many more. If I just make a glance of it, there are many things which I can get from that. First of all, the word misses. Many people says after life, the world ends. She proved it, no. You can achieve your dreams even after marriage if you are in the right spirit. Number two, not only a beauty. Just see the awards. There is a beauty queen, there is a Garba, there is a Rasoi. All three are from different backgrounds with different skills. But still, she couldn't manage it as one person, which tells us that if you want to learn, you can learn anything. There is nothing which will confine you to a specific skills or a specific delivery. But you can learn when you want if you have the right passion and you can achieve it to the height. And that's what we want to learn from her today. And that's why I would like to invite her on the stage to give us a speech, give us the motivation, which might inspire us also to achieve something which we might be aspiring, but we are not confident enough right now to achieve it. So let me call Mrs. Unnati Desai on the stage. मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही तारीफ करती है, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं भी पहले आप ही की तरह यहीं पे बैठी थी। रणवीर सर मुझे बहुत सालों से जानते हैं और मन में कहीं ना कहीं एक पैशन था, एक जुनून था कि नहीं, मुझे किसी से डिफरेंट करके कुछ दिखाना है। और ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले ऑल ऑफ वेलकम टू यू इन माय स्मॉल जर्नी। और जब मैं ये जो मेरी जर्नी थी उसका मैं लगभग 8 महीने से प्रिपरेशन कर रही थी और उसमें मुझे बहुत सारी तकलीफें आई। पास्ट में बहुत 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 मुसीबतों का सामना किया और जब मेरे वहां से कॉल आया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैं वहां गई तो मैं और नर्वस हो गई क्योंकि जैसे ही मैंने वहां पे एंट्री की तो मैंने देखा कि 37 कंट्रीज की 37 मिसेस और वो लोग भी मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर करके आए थे, मुझसे कहीं ज्यादा रेडी होके आए थे। तो मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ऐसे टाइम पे हमारे पास जो छोटी चीज होती है उसको हमें स्ट्रांगली अपनी स्ट्रेंथ बना के, जैसे सर ने बोला कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के मैंने मन में सोचा और एंटर किया कि नहीं, कोई बात नहीं, आई विल फाइट। और फिर उसी दिन से मेरी छोटी जर्नी शुरू हो गई और उस दिन कॉकटेल पार्टी इंट्रोडक्शन राउंड वगैरह था। वहां पे हम लोगों ने धीरे धीरे इंट्रो करने के बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने वहां पे देखा तो वो लोग तो वहां पे अपने फोटोग्राफर्स और अपने मैनेजर, अपने मेकअप आर्टिस्ट सबको लेके आए थे।
और अपनी साथ सारी चीजों को वहां से कैरी करके आए थे जब मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने वही फोकस किया कि मेरे पास क्या है कि जिसको मैं ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट कर सकती हूँ, जो वो लोगों के पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, उसको मैं कैसे स्ट्रांगली प्रेजेंट करूँ। फिर उसके बाद मेरी जर्नी वहां पे शुरू हुई। फिर दूसरे दिन पे हमारा शूट राउंड था, टैलेंट राउंड था। और जैसे ही हमारा मतलब ये सारे राउंड शुरू हुए, हम लोग एक दूसरे के नजदीक आए। और बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, लेकिन फिर भी मैंने कहीं ना कहीं, जैसे इंटरव्यू राउंड था तो सब लोग रात को रेडी कर रहे थे कि भाई गूगल पे सर्च कर रहे थे कि क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या पूछेंगे। और मैंने अपने आप तय किया था कि जो भी होगा वहां देखा जाएगा, क्योंकि मुझे तो आइडिया था नहीं। और इतने सारे क्वेश्चन में से आप कैसे गैस कर सकते हो कि आपके सामने कौन सा क्वेश्चन आएगा। फिर मैंने एक बड़ी स्माइल के साथ जैसे ही एंटर किया तो 40 लोग थे वहां पे, कैमरा था। और जैसे मुझे आगे बिठाया और पूछा कि आपने इस पेजेंट में पार्ट लिया है, आप अकेले हो, सारे लोग मैनेजर्स के साथ, टीम के साथ आए हैं बाहर से, तो आप कैसा फील कर रहे हो। तो मैंने उनसे बोला कि हम इंडियन वुमन मल्टीटास्किंग होते हैं, हम अपना बिजनेस, फैमिली, किड्स और इवन रिलेशन सब कुछ हम अपने आप ही मैनेज करते हैं। हमें कोई मैनेजर की जरूरत नहीं रहती है, हम इंडिपेंडेंट वुमन है और हम अकेले ही काफी है। तो वो क्वेश्चन का आंसर उनको बहुत ही मतलब ज्यादा इफेक्टिव लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपने 45+ इस पेजेंट में क्यों पार्ट लिया है। और आपके फैमिली में मतलब आपके 3 बच्चे, उसके साथ आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं 20 इयर्स के बाद मेरा टाइम पूरा फैमिली के साथ, बिजनेस में, फ्रेंड्स में, मतलब वही उस जर्नी में चला जाता था। तो मुझे लगा कि मुझे 45 के बाद ही अपनी सेकंड इनिंग जीनी है और मुझे अपने मतलब वुमनहुड को क्वीनहुड में ट्रांसफर करना है और ये क्राउन मुझे अपने सर पे देखना है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे थोड़े क्वेश्चन आंसर राउंड हुए। उसके बाद वहां पे दूसरे दिन टैलेंट राउंड था। तो वहां मतलब मैंने गरबे किए थे। तो अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोगों ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने सोचा ही था कि जो मेरे पास है उसका मैं बेस्ट 100% देने वाली हूँ। लास्ट टाइम जो ये गरबा का सेशन था, वहां पे जज खुद ऊपर गरबा करने आ गए थे और सारे कंटेस्टेंट लाइक गबा गबा करके पूरे कंटेस्टेंट स्टेज पे चढ़ गए। और वो माहौल पूरा मतलब हमारे तरफ ढल गया, ऐसा मुझे फील हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ कुछ करते हैं और आपको लगता है कि आप यहाँ थक गए, हार गए, तो आपके पास जो छोटे छोटे पावर्स है, छोटी छोटी वीकनेस है, जैसे मैंने अपने इमोशन को ही अपना स्ट्रॉन्ग हथियार बनाया है कि मुझे कहीं पीछे नहीं हटना है, मुझे ये करना ही है। एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ जब हम चलते हैं तो हम अचीव कर ही लेते हैं। तो मैंने आज, थैंक यू सो मच श्रुति मैम, जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मैंने आज अपनी छोटी जर्नी आपके साथ शेयर की है। तो थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन हो तो। She started off saying that I will share a very small story, but we all must agree that this is not a small story. It requires a huge courage to determine and to achieve this kind of pinnacle. So of course, this is not a small story. मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं हिंदी वीक थोड़ा It's okay. कि आपने कहा था कि उम्र के 45 के एज के बाद आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू कन्वर्ट अपना वुमन टू मेन। नॉट टू डू दिस या फिर टू अचीव ऐसे जगह के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ किसी इंडस्ट्री या इसी लाइन में, देयर कुड बी मेनी अदर। फिर आपने यही क्यों सिलेक्ट किया कि मुझे यही करना है, मिसेस एशिया में ही जाना है, मुझे जीतना है और मुझे प्रूव करना इसके पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी है। आज से 10 साल पहले मैं मिसेस इंडिया ग्लैडरेट्स में गई थी। वहाँ टॉप 5 तक पहुंची थी और वहां मैं आगे अचीव नहीं कर पाई थी।
तब से एक चीज दिमाग में थी कि अभी इंडिया नहीं, अभी सीधा एशिया लेवल पे ही मुझे विन करके आना है। We were dreaming in the childhood to become. We still have an opportunity to dream it again and we to achieve it again. That's a good thing. अगर मैं आपको पूछूं कि कौन से ऐसी 3 चीजें हैं जो सिर्फ मिसेस एशिया नहीं बट ओवरऑल किसी भी एंटरप्रेन्योर जर्नी में या अपने करियर में करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें आप हमें बताना चाहेंगे जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी पड़ेगी अगर हमें आगे जाना है? हाँ, वो सही है, उसका आंसर मैं खुद ही देने वाली थी। एक छोटी सी बात जो शेयर करने वाली थी कि कौन कौन सी चीजें जो हमें इसके अलावा भी बहुत जरूरी है, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। जब हम लोग वहां पे गए तो हमें 5 इंटरनेशनल टीम मैनेजर्स प्रोवाइड किए गए और उन्होंने हमें बोला कि आप ये मैनेजर है, आपकी केयर करेंगे और आप जो भी आपका कुछ है प्रॉब्लम उनसे शेयर करना। तो हम लोग 10 दिन जर्नी में साथ में रहे, उसके साथ बहुत कुछ बातें शेयर करी और वो लोग हमें ऑब्जर्व करते थे। और लास्ट दिन हमें पता चला कि 15 जज में वो 5 जज से जो हमें साथ में घूम के सेल्फी लेके खाना खा के हमको जज कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ आउटर ब्यूटी इज नॉट मैटर, उसके साथ साथ आपकी इनर ब्यूटी कैसी है, आप दूसरों को कैसे हेल्पफुल हो पाते हो, वो बहुत सारी सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटर ब्यूटी इज इम्पोर्टेंट, मैं मानती हूँ कि आउटर ब्यूटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मैटर करती हैं और ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट तो होता ही है। You want a mic? Take the mic for the online audience. देखिए, हेलो, थैंक यू मैम, आपने अपने एक्सपीरियंसेस स्टोरीज शेयर की। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ जो काफी जेन्युइन है और मुझे लगता है कि काफी लड़कियों को ये कंसर्न भी रहता है कि आप अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखते हैं। आपको सुन के बहुत ही ताज्जुब होगा, लेकिन मैंने मेंटेन ऐसे नहीं किया कि फूड का डाइट का ख्याल रख के, मैंने हमेशा खुश रह के अपने दिल की आवाज सुन के अपने आप को मेंटेन किया है कि मुझे जो सही लगता है वही मुझे करना है। अगर मुझे मन होता है कि मुझे मीठा खाना है तो मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन लिमिट में खाती हूँ। लेकिन मैं कोई चीज छोड़ती नहीं, अपने आप को खुश रखते हैं ना, तब सब कुछ अपने आप मेंटेन हो जाता है। एक क्वेश्चन जो मतलब हम लोग, मैं पर्सनली डेली की लाइफ में फील करती हूँ, जब हम शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फैमिली फैमिली प्रेशर, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आती है, आपको कभी डिस्करेजमेंट लगता है, और उन सब चीजों को आपने कैसे मैंने, आई एम श्योर ऐसे रहा होगा, बिकॉज आई थिंक इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरी वुमन। इतना इजी नहीं होता है और हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत कुछ होता है, मतलब व्हेन यू हैव अ किड, तो उसके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। मैं आपसे एक बहुत सही सही बात कहना चाहूंगी। जैसे आपने बताया हेल्थ इश्यू को भी कैसे जीतना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जिस डॉक्टर के साथ मेरा कंसल्ट हो रहा था, मेरे भी हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन आज वो डॉक्टर ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो छोटी मोटी चीजें जो है वो साइड पे करके अपने खुद के लिए जीने का एक जुनून बनाओ। और मैं इतना, इसके आंसर में मैं इतना कहूंगी कि जीतने वाले को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने अपनी जर्नी के बारे में हम सबको बताया, एंड ऑल्सो टू मोटिवेट। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि वी नो ऑल दिस बट स्टिल हम कहीं खो जाते हैं, सो थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने सारे टाइटल्स आपके पास हैं अभी, तो अभी कुछ तमन्ना बाकी रह गई है? व्हाट इज नेक्स्ट दैट यू आर प्लानिंग टू डू? मुझे, मतलब मेरे रोल मॉडल नीता अंबानी है,
और मुझे आगे जाके अपने बिजनेस, फैमिली, सोसाइटी सबके लिए बहुत कुछ करना है, यहाँ तक कि अपनी कंट्री के लिए भी बहुत कुछ करना है। तो ड्रीम्स तो अनलिमिटेड होते हैं, तो यहाँ जाके मुझे रुकना नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है और अभी तो आगे बहुत कुछ करना है। तो एज इज नॉट अ मैटर, और ऑल द बेस्ट फॉर यू टू। Congratulations, madam, and all the best to whatever you have wished for the future. So my question is, how you develop consistency in day-to-day life, because you might have seen ups and downs that it's as part, and it is like an epidemic today in this attention world that people are starting and it is vanished in it. So how you maintain consistency day in and day out that you know you have achieved here. Thank you. कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी चीजें, पहले तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको अपने आपके लिए एक शेड्यूल तैयार करना होता है कि नहीं, ये मेरी जर्नी है, यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। हम जहाँ वहाँ गए थे, वहाँ ग्रूमिंग में भी हमें यही सिखाया गया था कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको देना था, लक से मिलना था, मेहनत से मिलना था, ब्लेसिंग से मिलना था, वो सारी चीजें हमको मिली है। तो उसको हमें कैसे मेंटेन करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमें अपना एक शेड्यूल बना के चलना पड़ता है कि नहीं, आज हमें ये करना ही करना है। आज सुबह उठ के मतलब ये चीजें होनी ही चाहिए। अपने आप में एक डिसिप्लिन रह के अगर चलते हैं तो एवरीथिंग इज मैनेज। रणवीर सर। थैंक यू सो मच। Yeah, definitely. I would like to say something about you because I've seen, I've seen her growing step by step, and she has started the career from where Transky Plaza only. So first fashion show has organized in our building only. So she has started, I think, 10 to 15. yeah. So it is long story. But she has performed the day when she came here. I was just wondering because I was judge at that time, and we were judging the entire contest. She has done a really wonderful job, and the way she has created. Only thing is, I will admire from her is she is maintaining with the family, and her husband is very nice and very cooperative. So सबसे बड़ा हाथ उसी का होता है जो आपको आगे बढ़ाता है. तो मुझे लगा कि हाँ, There is a man behind a successful woman. यस. सो मुझे उनके बारे में पता है तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको मैंने देखा हुआ है शुरुआत में और आज यहाँ पर है. हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मैम. थैंक यू वेरी मच. वंडरफुल जर्नी यू शेयर. लेकिन आपको देख के वो जो रसोई क्वीन का टाइटल बड़ा इसमें समझ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको खाना बनाने का शौक कहाँ से हुआ और किस तरह से आप आगे बढ़े उसमें. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और आपकी बात एकदम सही है, लेकिन क्या होता था कि जब मेरे बच्चे मुझसे बार बार बोलते थे कि मुझे यहीं पे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, ये खाना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बहुत कुछ सीखी, बच्चों की वजह से बहुत कुछ सीखी। और फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में ज्यादा होने लगा, और फिर धीरे धीरे मेरा वो पैशन भी बन गया। और आज भी आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि आज भी मैं अपना खाना खुद ही पकाती हूँ, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। आज भी हम लोग अवॉइड करते हैं कि ज्यादा बाहर जाए, जंक फूड खाए वगैरह। तो घर का खाना तो घर का ही होता है, तो उसके लिए कोई भी टाइटल जीते, कहीं पर भी जाए, लेकिन उसकी मिठास तो अलग ही होती है। तो बच्चों की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है,
और जब वो मुझसे कोई डिमांड करते थे कि मम्मा मुझे ये चाहिए, और स्कूल के डिब्बे में कहीं से जाके बोलते थे कि आपसे ज्यादा तो इसका टिफिन अच्छा है, तो मम्मा को एक हर्ट होता था, कि इतना अच्छा। फिर मैं फोन करती थी कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे बनाया, और दूसरे दिन उससे भी अच्छा टिफिन बना के भेजती थी। तो कहीं ना कहीं ये पैशन मेरा थोड़ा कुकिंग के लिए ज्यादा वो हो गया। I'm sure normally she must have inspired us all. And you might be thinking, what could be our passion which could be used to win the world? In fact, from our last answer on the grocery queen, we could also understand how we can convert our daily need into a passion, and then it can be used to make an entrepreneurial journey and still win the world. So we need to really think upon what can be done so that we can find out a very small things which could might be turn out to big for everyone else. Agreed, and thank you for. Now, once more clap for her. Now I would like to introduce and welcome our second guest. Now his journey comes from a similar DNA but in a different field. If I see his profile, I see the designation of the tags normally with his name is as designer, social entrepreneur, business consultant, motivational speaker, and business trainer. At first, we might find that all are slightly here and there different, but he has covered all those things to achieve his passion. He is currently working as a director in the Dharohar Foundation. He is also a director at the Wait India Heritage Act Foundation, and he is empaneled for the Gujarat State Handlooms and Handicraft Corporations. And recently on this stage, I came to know he also judges the fashion show. So that's also one more thing which he does. When he was asked about his vision, he said his vision is to promote a better life for rural and urban craft artisans through value-based income generation of handloom and handicraft, which comes from a social responsibility, business acumen, and then again giving it back to the society, all together into the one vision. I'm sure he will inspire us again in a different way so that normally we could do something with our life which could again give back to society. With this, I would like to welcome our next speaker, Ranveer Sushila Sisodia, on stage. Welcome. Thank you. जी नमस्कार। कहाँ से शुरू करूं अभी पता नहीं है। I will start with my journey with the student time, like when I'm talking about 1997-98. So I pass out from MS University as a fine arts student and done my graduation in applied art. वहां से जो शुरुआत हुई है, everybody is comfortable with the language, both the language. Okay, done. So I completed fine arts, and then there was a 1 month with me to go and join the agency in Mumbai. That is a Tirkai Gray advertising agency. And I supposed to be there as a designer over there, graphic designer. So एक महीने का जो टाइम था उसमें मुझे लगा कि चलो गांव में चलते हैं, because basically I'm from rural area, Dahod. So I went to again my hometown, and I was just, because I'm having the photography as my one of the favorite subject. So I thought, let me just go and enter to the photography world and just click some compositions. And that was the important journey. When I interacted with the rural community, some bamboo people, bamboo artisans was creating the bamboo baskets. And I have seen them, and I thought let me just take their composition, photography composition. So I asked them like, what you are doing? They said, well, we are making baskets. And then I said, when you sell these baskets? So they said, we don't sell. It was surprising for me, because we are from the commercial world, and going to the village and somebody say, we don't sell. So he said, फिर किसके लिए बना रहे हैं? Then they said, we just give to अनाज वाला, and अनाज वाला give it to us अनाज. So I thought it is a barter system. It is very interesting.
So then my interaction started with them. And then I asked, okay, fine, if you are giving this and they are getting the anaj to you, what about the other requirements? फिर हमारे पास तो कितनी सारी जरूरत है ना, सिटी में तो बहुत जरूरत है. Then said, same thing we go. फिर हम अनाज वाले के यहाँ से, जैसे हमारे पास अनाज आता है, हम किराने वाले को देते हैं, किराने वाला हमको पैसा कभी कहीं जाना है तो वो दे देता है. सो ये इंटरेक्शन मेरे लिए नया था. दिस वाज द न्यू थिंग्स फॉर मी. देन आई सेड, आपकी फैमिली के जो लोग हैं वो कहाँ हैं? एंड दे सेड एवरीबडी इज एट गुजरात. गुजरात यानी शहर में है और हम लोग गांव में रहते हैं. तो मैं बोला, जब आप गांव में हैं वो शहर में है, तो फिर अगर आपको कुछ तकलीफ हो तो कौन ध्यान रखेगा? और मैं थोड़ा सेंसिटिव था, इसलिए मैंने और क्वेश्चन उनसे किए. मैंने बोला, आप अकेले हैं, आपकी उम्र देखिए, यहाँ पर 50-60 साल की है, अगर कभी बीमार हो जाते हैं तो कौन आपको ध्यान रखेगा? और पूरे गांव में कोई भी नहीं, करीब 2 किलोमीटर दूर तक पैदल कर चल के जाएंगे, वहां पर कोई व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा, और वो अकेले एक झोपड़ी में रह रहे हैं. तब उन्होंने बताया कि वो जब नेक्स्ट टाइम दिवाली पे या होली पे आएंगे तब हम उनसे मिलेंगे. तो मुझे और क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और पूछने लगा मैं कि ये क्या सिस्टम है आप लोगों का, जिसकी वजह से आप गांव से लोगों को शहर में जाना पड़ रहा है, जबकि हमारा देश 70% गांव में बसा हुआ और हमारी हमारी धरोहर गांव में. तो ये क्यों ऐसा है, ये जो लोग शहर में जा रहे हैं? देन आई इंटरेक्टेड एंड आई कम टू नो, उन्होंने शादी करी थी बच्चे की, और उस बच्चे की शादी में उन्होंने जो पैसा लिया था उसकी रिकवर करने के लिए वो शहर में गए थे कमाने के लिए. जनरली हमारे यहाँ पर शादी होती है तो लोग अगले हफ्ते हनीमून के लिए जाते हैं, और गांव के अंदर वो कर्ज देने के लिए वहां पर गए हैं. सो सी, दिस इज द डिफरेंस. एंड आई वाज इन यूके after completion of graduation. Then I went to UK and I just learned export management from Netherlands, and export management from the business counseling from UK. So ये दो कोर्स मैंने जब वहां पर किए, तब मुझे और विजन खुलते गया हमारे देश को और डेवलप्ड कंट्री को देखते हुए. तब मालूम पड़ा कि हमारा देश कहाँ है और उनका देश. अगर वहां पे किसान की बात करो तो बड़े गर्व के साथ बात करते हैं, और हमारे देश के किसान की बात करें तो बड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं. तो ये ऐसा क्यों है, जबकि इतनी अच्छी क्राफ्ट है हमारे पास, और मैं एक डिजाइन बैकग्राउंड से था. देन आई सेड, लेट मी जस्ट टेक द चैलेंज. मेरे पास 1 महीना है, 15 दिन मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं डिजाइन बनाऊंगा आपके लिए, जो भी चीजें बनेंगी वो हम लोग उसका मार्केट देखेंगे. एंड आई हैव स्टार्टेड माई स्टार्ट जर्नी ओवर देयर. वहां पे मैं गया, उनके साथ बात किया, और उनके पास जितने भी डिजाइन जो वो बनाते थे उसको मैंने कमर्शियल मार्केट के हिसाब से कन्वर्ट किया. और कन्वर्ट करने के बाद में जो प्रोडक्ट बने, वो प्रोडक्ट बनने के बाद में मुझे लगा कि इसका सेल हो सकता है. देन आई पुट अ एग्जीबिशन इन बड़ौदा ओनली. सो मैं यहाँ पर आके उनको सेल किया और देखा कि बहुत अच्छा सेल हो रहा था. मैं वापस से गांव में गया, मेरा ज्वाइनिंग लेटर त्रिकाय ग्रे का था, वो मैंने फाड़ दिया. एंड आई थॉट, लेट मी कॉन्ट्रीब्यूट दिस माई जर्नी फॉर द कम्युनिटी ओनली. और उस दिन के बाद से मैंने करीब 17 साल तक गांव में रह के 3,000 लोगों के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया. ये मेरी शुरुआत थी. वहां पे काफी लोग 120% रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज पे लेके अपनी शादियां कराते थे. 120%, यानी आप समझ सकते हैं कि आपने अगर 1,000 रुपया लिया है तो आपको 1,200 रुपया उसको रिटर्न करना है. मीन्स 2,200 रुपया उसको लेना है. अगर उसने 10,000 लिए हैं तो उसका डबल अमाउंट उसको वापस से पे करना है. तो ये तो हमारे देश से कभी भी गरीबी जाएगी नहीं, और जो अमीर है वो ज्यादा अमीर होते जाएंगे और गरीब गरीब होते जाएंगे. बस ये एक सेंसिटिविटी थी जिसकी वजह से गांव में मैं रुका, और 80 गांवों में काम किया मैंने, और करीब 10 अलग अलग हैंडीक्राफ्ट को डेवलप किया. जहाँ पे क्राफ्ट नाम की कोई चीज नहीं थी, ऐसी क्राफ्ट को डेवलप किया. वहां पर बीड वर्क किया, एम्ब्रॉयडरी किया, ब्लॉक प्रिंट किया, टाई एंड डाई किया. ऐसे अलग अलग क्राफ्ट में काम करते गए और लोग मिलते गए. जैसे भाई साहब ने बताया कि if you are starting work with anywhere, you will get a good people also, and God gives people to you. और आपकी जर्नी शुरुआत हो जाती है. फिर उसी दौरान में मोदी जी से मुलाकात हुई, उनके साथ में काफी सारा काम किया, सोशल डेवलपमेंट में काफी काम किया. फिर हमने एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, उसका नाम रखा धरोहर फाउंडेशन, जो हमारे विरासत को संभाल के रख सके. नेशनल और इंटरनेशनल काफी सारी ऐसी घटनाएं हैं. समय बहुत कम है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताएंगे. एक हमारे जो जगह है दाहोद, वो बॉर्डर का एरिया है, राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर है, इसलिए उसका नाम है दोहद.
वहां पे जितने भी आदिवासी रहते हैं उनका कहीं पे भी नाम किसी क्राफ्ट की वजह से नहीं। तो वो एक, मैडम ने बताया जैसे जुनून होता है, ये उस टाइम पे मुझे जुनून था कि मेरे गांव का नाम, मेरे मेरे गांव का नाम एक कारीगर के हिसाब से भारत के नक्शे में कहीं पे आए, और हमारे यहाँ के लोग कारीगर के नाम से पहचाने जाए, न कि लेबर की वजह से। दाहोद इज नोन फॉर द लेबर ऊपर। और वहाँ के जितने भी ट्राइबल्स हैं वो लोग सब आदिवासी के हिसाब से पहचाने जाते हैं, हार्ड वर्किंग के हिसाब से। और सब फीमेल वहां पे, जबकि हाथ की मेहंदी सूखती भी नहीं है, और उसको शहर में जाना पड़ता है, स्लम्स बनाते हैं, सिटी में रहते हैं, और रहने के बाद में जो भी अनाप शनाप काम है कुछ करते हैं। तो वो एक मजबूरी का काम है जो यहाँ पर आके स्लम्स डेवलप करते हैं। तो हम लोग दो फोकस करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन। एक, हम माइग्रेशन को रोकते हैं, जो गांव के लोग हैं गांव में रहें, और शहर में जो आ गए हैं अब उनको हम किस तरह से एम्प्लॉयमेंट के साथ में जोड़ें। तो अभी हमारा फाउंडेशन है जो काम कर रहा है दोनों तरह से, कि गांव में जाके जो लोग हैं उनको कैसे स्किल दें ताकि एक अल्टरनेटिव स्कीम इनकम उनको मिले, और जो शहर में आ गए हैं अब आने के बाद में उनको भगा तो सकते नहीं है, तो उनको क्या स्किल देना है। तो यहाँ पर भी जैसे बस टर्मिनल में आप देखेंगे, तो 2014 में मैं जब यहाँ पर आया, तब यहाँ पर कारेली बाग के पास में जो एक स्लम है, वहां पर मैं गया, सुबह 8 बजे जाता था, और वहां से बहनों को इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आता था, और खुद उनको टॉयलेट कैसे साफ करना है, झाड़ू कैसे मारना है, क्योंकि वो सफाई का काम दूसरी जगह करते थे, उनको यहाँ पर हमने सिखाया। तो आज आप हमारे बस टर्मिनल पे भी देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारी फीमेल है जिन लोगों को सफाई के अंदर हमने जोड़ा है, और आज भी हमारे साथ 2014 से आज तक जुड़ी हुई है, और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, एक अपने स्वाभिमान के साथ इनकम जनरेट करके वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल पूरा कर रही है। अभी हम लोग हमारा फाउंडेशन जो है वो देश में तो काम कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल भी हम लोग काम कर रहे हैं, कि यहाँ के जो इंटरेक्शन है, जो प्रोग्राम्स हैं, उसको हम यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय कक्षा तक भी लेके जा रहे हैं, नेशनल लेवल तक लेके जा रहे हैं, और काफी इंटरेक्शन करके वुमेन एम्पावरमेंट का जो एग्जाम्पल है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वुमेन किस तरह से अपना काम कर सके, उसके लिए काफी सारे आयोजन कर। So I think this will give you an idea what we are doing and how I have converted myself into as a designer to the social entrepreneur part of it, and how I keep continue learning as my main part, and I keep doing the things for the wellness of the society. Thank you very much. So, It was really inspiring socially. I was resembling it with the Swadesh movie, where someone went to the US, comes back to India, and goes back to me. He went to UK, came back, got job in Bombay, but left it and then normally stayed here. That's a really inspiring and courageous one. I would like to ask you one question. So when you, as you said, that you are always behind the corporate. Yeah. Being, I also did my engineering, MBA, and for the corporate. So what was the exact trigger for you where you decided to bus? Now, no more corporate, we will focus on this. We will do something which will benefit mutually for them and us, and we will try to grow this. What was the exact trigger point? The major point when I was, I mean, kid, I can say I was just 5, 6 years old. I have seen the poverty in the villages, and the knowledge which is the lacking in the rural people was very big, and that I have seen somewhere in the family also. The family members, they were also suffering from so many part, because that time the digital world was not there, so awareness was also not there, and I thought like how we can give, जो ये, अगर मुझे मालूम नहीं है गांव का अगर कितने लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, how many people belongs to the village. Okay, so if you know about the जो ब्याज का पैसा लेके और जो दादागिरी करते हैं, अगर आपने उनको किसी ने देखा हो, और कभी कोई बचपन में अगर उसको देख लेता है, तो एक जो दहशत आपके दिमाग में बैठती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, कि इन लोगों को हमको निकालना है। आज अगर आप बैंक का भी इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, सी देयर आर सो मेनी मनी लेंडर्स राइट नाउ, इट इज अवेलेबल इन मार्केट आल्सो. If you can see what they are doing, they are just giving money to them, and how much percentage they are taking. बैंक अगर आपके पास से 15, 17, 18% लेता है, उस टाइमिंग के अंदर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा ही पैसा बैंक में रखा है, और मेरा पैसा रखने के बाद भी सर्विस चार्ज के हिसाब से वो मेरे से पैसा ले रहा है। तो आपको आपके पैसे के लिए भी जब गुस्सा आता है, तो आप तो सोचिए आपका गांव का व्यक्ति कोई गरीब है, और उसके ऊपर 3 पीढ़ी से
अगर कर्जा चढ़ा है, मैंने जिसके साथ में काम किया वो लोग, बहुत सारी स्टोरी है मेरे पास में। मैंने 17-18 साल गांव में गुजारे हैं। आप सोचेंगे एक एक लोगों की स्टोरी कुछ न कुछ है। आज जो व्यक्ति वहां पर बैठा है उसके ऊपर उसके दादा का कर्जा है, वो खुद का नहीं भर रहा है। अब आप ऐसे सेंसिटिव एरिया के साथ में अगर आप वहां से निकल रहे हैं तो आप उस प्रोसेस के एज ए ह्यूमन बीइंग, इफ यू विल पुट योर सेंसिटिविटी, यू विल कम टू नो कि ये इसका कर्जा तो इसका बच्चा निकालेगा, उसके बच्चे का बच्चा को पैसा देना पड़ेगा। तो यू कैन इमेजिन कि ये सीरीज कब खत्म होगी। सो कुछ चीजें ऐसी होती है कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपको जब हर्ट करती है, और जब लाइफ में आपको वो डायरेक्शन में चेंज आता है, तब आपके पास में एक मोटिवेशन पार्ट भी आता है, और वो ऊपर वाला कराता है। आई डोंट नो, सिचुएशन वो देता है, अगर उसके में से हम जीत ले लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़े, मुझे ऐसा लगता है। तो लाइक यू से कि गांव में बहुत प्रेशर होता है, पीढ़ी जात नॉर्मली करता रहता है, and they have it rudimentary because that is the practice going on for a long time. Now when you approach them to make a change, कि हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, मैं डिजाइन, जैसे आपने कहा था कि मैं डिजाइन बना के देता हूँ, लेट्स से इट। Now change is something which is very difficult to implement. It's very easy to say, speak, but very difficult to implement. तो जब आप तो बाहर के थे, जब बाहर से वहां आए, और जब आपने उसके साथ कनेक्ट किया, and when you want to implement the change, what were the 3 things which were really helpful to you to convince them to agree for it and then make it sustainable? Okay, very good question. Actually, I took 3 years to convince first myself. There was a statement, because single person thought can work, but it is, you can't alone do it anything. You need a team also. So first, to develop the team is very important in any sector. So when I was just thinking to do something for the community, I was started thinking, भाई पहले तो मेरे जब साथ वाले हैं पेरेंट्स तो बोल रहे हैं भाई पढ़ने के बाद बच्चा बाहर जाता है, तो बाहर से गाँव में आ रहा है। सो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था, उनको कन्विंस करना, फैमिली को कन्विंस करना। सो आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, दे हैव गिवन मी लिबर्टी टू डू समथिंग व्हिच आई वाज थिंकिंग एंड आई रिस्पेक्ट, because in my early days I was very entrepreneur. So in 1987 I got the Rashtrapati Puraskar. So by R Venkat Raman, so he has given me the award. सो उस टाइमिंग में उन्होंने देखा होगा शायद, अभी मैं उसका एनालिसिस कर सकता हूँ। तो देन दे हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू डू इट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फॉर द सोसाइटी, बिकॉज माय डैड वाज यूनियन के अंदर, ही वाज अ लीडर। सो कुछ चीजें शायद होगी उनकी मेरे में आई होगी, और एक सहानुभूति की वजह से भी वो मुझे देख रहे होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा पार्ट था, जब कम्युनिटी को आपको चेंज करना है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई सेड 3 साल मैंने अपने आप को सोचने में लगाए कि क्या मैं ये काम करूं और क्या इस फील्ड में मैं एंटर हूं, बिकॉज चैलेंज वाज टू एम्पावर वुमन। दैट वाज द वेरी बिग पार्ट, एंड हु एम आई टू एम्पावर द वुमन, बिकॉज वुमन इज हरसेल्फ एम्पावर। वो इतना सारा काम कर रही है, मैं देख रहा हूं, लेकिन सिर्फ हमको कुछ परत में से सफाई करना है और उसको बाहर निकालना है। तो जब मैं जेनेटिकली बहुत सारी चीजें देखा, जब बहुत सारी चीजें मैंने चेक करी, तब मुझे मालूम पड़ा कि वाई मेल एंड वाई वुमेन, ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। देन अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट दिस पार्ट, बिकॉज फाइन आर्ट्स हेल्प मी टू थिंक। मेरा थॉट प्रोसेस फाइन आर्ट्स से डेवलप हुआ, बिकॉज यहाँ पर मैं आई वॉज इन अ विजुअलाइजेशन। सो विजुअलाइज करके, एंड आई हैव जस्ट थॉट लाइक कि किस तरह से हम लोग एक सोसाइटी को अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली एजुकेशन मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मैंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं करी, मैं अभी भी मास्टर्स कर रहा हूँ। सो 2006 में अगेन आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग इन एमबीए फ्रॉम द एसपीजेएम जेएमआर मुंबई से। तो मैंने वहां पर भी वापस से पढ़ाई किया, तो पढ़ाई मेरा कंटिन्यूस रखा। और एजुकेशन जो मैं आप बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डिजाइन बैकग्राउंड से था, मुझे मार्केट के बारे में मालूम नहीं था, बट जैसे आपने बताया कि कंटिन्यूटी जो रखना था वो मैंने कभी छोड़ा नहीं। तो एक तो ये था कि मैंने कभी भी पीछे हट नहीं गई, नेवर गिव अप। वो सबसे बड़ा मेरा लाइफ का लेसन लर्निंग था कि मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि आई जस्ट बिलीव इन टू द फिलोसॉफी, सो आई लिसन लॉट ऑफ फिलोसोफर्स, सो दे ऑलवेज सेज लाइक व्हाई यू वांट टू लिव। और लाइफ बहुत बड़ी है, हमको तुरंत सब कुछ नहीं कर देना है, आज ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो आपको हर पार्ट में इतना सारा चीजें मिल रहा है, यू जस्ट एंजॉय दैट पार्ट। हर वक्त पे कुछ न कुछ नई चीजें मिलती है, उसमें से बीच में मैं आपको इंटरप्ट करूंगा।
लास्ट ईयर मेरे साथ में एक नया चेंज आया। उसमें मैं ऐसा चेंज बोलूंगा कि थॉट प्रोसेस वही है कि टू सपोर्ट समवन टू ग्रो देमसेल्फ, यू नो। सो हमारे फाउंडेशन में हमने डिसाइड किया कि हम किसी एक व्यक्ति को दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, उसके लिए उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। तो वो कैसे करना है? अब उसी समय हमारे साथ में कौशल जी हमारे साथ मिले। आज मैं उनको स्पेशल लेके आया हूँ यहाँ पे। गिव अ बिग हैंड्स टू हिम। Kaushal, and Kaushal is associate with us last 1 year with me, and now I am trying to support him through his skill. He is not able to see, not able to walk properly, but he is a very good singer. And I will just give you the example. और आज इसलिए मैं यहाँ पर साथ में उनको लेके आया हूँ क्योंकि आज वर्ल्ड हैंडीकैप डे है। तो आज उनका शो है हमारे यहाँ पर, बट मैं उनसे आपकी इजाजत हो तो एक लाइन गाने के लिए उनको मैं कहूंगा। हाँ प्लीज। ईश्वर अपने साथ की क्या बात, ईश्वर अपने साथ क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, हम अपने साथ हैं, क्या बात है। Oh, wow. थैंक यू वेरी मच। सो यही सब प्रयास है और उसके पास बहुत अच्छा माँ सरस्वती की देन है। सो वो गाता बहुत अच्छा है। आज हमने शाम को यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। तो हम लोग ऐसे काफी सारे इवेंट्स इस वेट ट्रांसक्यू प्लाजा में करते रहते हैं। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ दिस वेट ट्रांसक्यू प्लाजा ऑल्सो। सो वी कीप डूइंग द सोशल कॉज के लिए हम लोग काफी सारे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। नॉट टोबैको ये पूरा जोन, यानी मैं 2014 में गांव छोड़ के फिर मैं शहर में आ गया और 14 के बाद से मैं यहाँ पर वेट ट्रांसक्यूब में हूँ। तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारे यूनिक चीजें करी। इंसान में जब इंटरनल कोई चीजें अगर होती है तो वो कहीं जाती नहीं। तो अगर कोई चीज का बीज आप में फूटा है तो उसको रोकना नहीं, और उसको कहीं पे भी आप रहेंगे तो वो सोशल वर्क के हिसाब से या आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको आगे लेके जाएंगे। तो अभी हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो था कि हम ऐसे बच्चों के साथ में इस तरह का कार्य करें कि जो परिवार के ऊपर बोझ ना बन सके। और अभी वो जवाबदारी मैं अकेले नहीं निभाता हूँ, अब वो जवाबदारी मैंने उसको दी है। और इस तरह से हम टीम में बढ़ावा करते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि वो टीम में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। चैलेंज होता है, लेकिन आपके अपने ऑब्जेक्टिव को, अच्छे ऑब्जेक्टिव को किसी के साथ शेयर करें, अब वो उसकी टीम बनाएगा हमारे साथ में। और ऐसे काफी बच्चों को यहाँ से प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके बाद वो दिल्ली जाके आया हमारे साथ में, वो पहली बार फ्लाइट में जाके आया, है ना। तो ये हमारे सब लाइव एग्जांपल्स हैं जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। 21 से 25 एक हमारा इवेंट कर रहे हैं जिसमें काफी सारी महिला एंटरप्रेन्योर्स अतिथि गृह में आने वाले हैं। मैं आपको उसका डेटा शेयर करूंगा, आप आइए वहां पर देखिए। काफी सारे जो मेरे साथ जुड़े हुए 3,000 लोग हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा लोग गांव से यहाँ पर आएंगे और अपनी क्राफ्ट के बारे में आपको बताएंगे। या थैंक यू वेरी मच। You answered my third question also, which I was going to ask. What was your family's reaction? Because it's very difficult when you shift from a corporate to an NGO or social responsibility or CSR like thing. But it's a very good example if you see that how we can use our corporate skills to make a difference in a society and make a new way of life normally for us and for others.
Because what you were sharing was like a shared vision, spy concepts. All these are corporate things which we generally use, which can be embedded here. Now I'm opening the forum for the audience to ask questions. I'm sure there must be a lot of questions. Yeah, sure. Please. Thank you very much, sir. Because of one thing, in recently, I think 3 to 4 weeks back, there was an article published in Economic Times, which is saying that the biggest challenge India is facing now is to reskill the 500 million. That is somewhere around 50 crores. We are now 140 crores population. That is 50 crore people are annual income is less than 1,20,000. That is what they are, identifying the village people. And you are closing that gap by enhancing their skills and transferring that skills into monetizing that in modern India. That thank you very much for that. And second one is like as we are aiming in 2043, we will become Amrit Kal, that is developed India. We are in 3.75 trillion. We will hit 25 trillion. That is what government has declared. So for that, it is a very big, step you have taken, and I hope that has going to continue. So thank you for that. My question is, as you travel from UK, came back from UK, then you went to village and all the things you have done. Any this 3 years you have taken to convince yourself before convincing to others. So question is, getting the 3 years of your persistence, have you ever identified that ROI, what is the ROI, return on investment you will get out of this journey, that 3 years of period? Have you ever thought about that? Because that was very early stage. So I don't think so I have thought about my ROI that time. Because if I was thinking about those concepts, बहुत सी बार ऐसी आप बेवकूफी करते हैं लाइफ में, लोगों को वो बेवकूफी लगती है, लेकिन आपको अंदर मालूम है ये प्रोसेस इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है. अगर आप अपने आप में अंदर देखेंगे ना, तो आपको सामने वाला आपके ऊपर हंसता होगा, लेकिन आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सही कर रहा हूं. और आप अपने से झूठ मत बोलिए. बस एक चीज मैंने उस टाइम में देखा कि मुझे मेरे अपने आप से झूठ नहीं बोलना है. मुझे ये नहीं आता है तो नहीं आता है, मुझे ये आता है तो आता है. उस चीज के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. मेरे बच्चे के स्कूल में मुझे बुलाया और बोला कि अभी हम लोग फीस बढ़ा रहे हैं. ये मैं दाहोद की बात कर रहा हूँ, वहां पे बच्चा पढ़ता था. तो उन्होंने बोला कि हम आपको अब आपसे आगे आते महीने से आपका 1,200 रुपया हम बढ़ाएंगे. तो हमने बोला क्यों बढ़ा रहे भाई? तो बोले कि आपको इसके लिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लंदन से, उनको ये नहीं मालूम था मेरा बैकग्राउंड क्या है, लंदन से रॉयल कॉलेज में से कोई आएगा और आपके बच्चों को इंग्लिश सिखाएगा. आई सेड वेरी गुड. और मेरा बच्चा 5वीं कक्षा में. तो ऐसे बच्चे को वहां से सिखाने की क्या जरूरत है? हमारा वहां से आप लेके, क्योंकि उनका तो ब्रांड है, वो बिजनेस है, स्कूल है. तो मैंने उनके साथ में, किसी पेरेंट्स ने हाथ नहीं किया. मैंने उनको बोला आई एम नॉट एग्री ऑन दिस पार्ट. माई सन डोंट वांट टू लर्न दिस इंग्लिश, लेट इट बी. उसको नहीं सीखना है. आई सेड हाउ कम यू आर सेइंग लाइक दिस? बिकॉज नाउ एवरीबडी विल बी अगेंस्ट ऑफ दैट लैंग्वेज. आई सेड I send my kid to develop the skills, not the language. Language will be developed after the education. If he wish to develop the language, he can develop. So why you want to develop the language? अभी जरूरत नहीं है कि वो किस तरह से प्रोनाउंस करेगा, किस तरह से बात करेगा. I said मुझे मेरे बच्चे में स्किल्स चाहिए, और स्किल्स के लिए मैं बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ. क्योंकि मेरे साथ में कितने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग ऐसे हैं जो रिवोल्यूशन लाइफ जी रहे हैं, अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा है, 10वीं में सीधा एग्जाम के लिए भेजा है. ऐसे काफी सारे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करवा रहे हैं और एग्जामिनेशन के टाइम पे भेज के बच्चा अव्वल नंबर आ रहा है. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, उस एजुकेशन सिस्टम्स को हम किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, ये तमाम चीजें जब अपने आप से आप पूछना शुरू करते हैं. आई रोट अ लेटर टू द मिनिस्ट्री ऑल्सो एंड सेइंग दैट वी शुड स्टॉप आफ्टर 12th एवरी किड्स दे शुड नॉट गो टू द स्कूल. Let them go to the explore the world. क्या करेंगे? 70-80 साल जीना है. 40 साल के बाद तो आप सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं. तो आपको क्या जी लेने का है आज?
आप ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए, बच्चे को 2 साल गैप दीजिए, उसको देखने दीजिए वर्ल्ड क्या है। अभी तो मेरे यहाँ पर बड़ौदा जब आया 2014 में, तब मैं यहाँ पर देख रहा था कि बच्चे को 6ठी क्लास से ट्यूशन 10वीं का भेज रहे। So what is the education system in our country and where we are going? I am just fighting against the to the government also. So वो जो 3 साल थे वो मेरे लिए बहुत important थे. I gained the knowledge from different world. I gained the real knowledge of the tribal. Tribal never salute, never salam to any god or goddesses. They salute and salam to the nature. That is the best part. हम लोग grievances create कर रहे हैं. Who are we? We are the human beings and we are creating. Humanity should be the our religion. Where we should, आपने जब बोला सबसे पहले, I should not talk about this part, but it is the fact of our country. We should know about these things कि कहाँ पे हमको वर्कशिप भी करना है. ये हमको, मेरा चॉइस नहीं था कि मुझे इस जन्म को कहाँ पर लेना है, बट अभी तो मुझे चॉइस है कि मुझे कैसे जीना है. तो अब तो मैं समझ सकता हूं, अब तो मैं समझ सकता हूं. तो क्या मैं अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय किसी की भलाई के लिए दे सकता हूं? वो 3 साल का जो सफर था उसमें काफी अप्स एंड डाउन आए. उस टाइम पे आई वेंट टू पौंडीचेरी, आई स्टे देयर, आई वेंट टू शांति निकेतन, कैलकाटा. आई लर्न दैट, आई अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ रविंद्रनाथ टैगोर वाज थिंकिंग. ही हैज आल्सो स्टार्टेड हिज करियर एंड थॉट प्रोसेस इन 40. तो ये इन लोगों ने क्या करा है देश के लिए, क्या किया है. गांधी जी ने जब बात किया था तब वो क्या सोचते थे. गांधी जी शायद आज होते तो ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता जो आज हो रहा है, क्योंकि वो एरा अलग है. आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा. तो फीमेल की स्थिति क्या है, गांव की, शहर में क्या है, और बेसिक नेचर क्या है, ये जब तक आप समझेंगे नहीं, लोगों के बारे में नहीं समझेंगे, अपने बारे में नहीं समझेंगे, शायद इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स आल्सो. सो मैं तो ये एक ही बात बोलूंगा कि आप अपने आप से कभी झूठ ना बोलें. जो हकीकत है, भले दूसरे को जो बोलना है, पर अंदर कॉन्फिडेंस ये रखें कि मेरी भाई साहब सच्चाई यही है और मैं इतना ही पावरफुल हूं और मुझे इतना ही आता है, ताकि मैं ग्रो हो सकूं. जिस इंसान ने खुद से झूठ बोलना शुरू किया ना, वहां से झूठ की शुरुआत हो जाती है. तो शायद वो 3 साल में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आई शुड बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ. एंड आई ऑलवेज से you should be honest with yourself always in any manner. That is the major part. Please. But you have my wife. मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि great from corporate world to the when you're from high zone to lower zone. Yeah, you've taken a very challenge taking this. How you have convinced your parents? That is the Yeah, that's true. And उससे भी बड़ी बात, जो लड़की मेरे साथ थी उसको कन्विंस करना. हाँ, या no, या सही सही बात है आपकी, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बच्चा एक अच्छी जगह पे जाए, अच्छा कमाए उसके लिए. बट उस टाइमिंग में जो, सॉरी टू से, मुझे यहाँ मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है, मेरी मेरी किताब खुली है. उस टाइम पे जो गर्ल्स शी वाज विथ मी, शी लेफ्ट दैट पार्ट बिकॉज मेरा पढ़ाई करने के बाद का विजन पूरा बदल गया और मेरा कमिटमेंट उसके साथ उसके पहले हो गया था. तो जब कहते हैं ना कि मैं उसमें अच्छा सोचता हूं कि आपकी जो रियल सफर के साथी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप, सिर्फ माँ बाप है, बाकी कोई नहीं. और उसमें सबसे पहला अटैचमेंट जो आपकी माँ के साथ है, उनको इतना कॉन्फिडेंस शायद मुझ में था, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जो कर रहा हूं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं. और वो एक जो बेकिंग होता है ना, वो ही आपको मोटिवेट करता है, वही आपको आगे लेके जाता है. क्योंकि उस टाइमिंग के अंदर काफी सारे चैलेंज थे. आजू बाजू वाले, हमारे यहाँ तो इंडिया में मालूम है कि घर में चिंता नहीं होती उतने बाजू वाले को चिंता होती है ना. तो बाजू वाले तो पूछेंगे आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, अच्छा तो यहाँ आ गया है. और उस टाइमिंग में उनके गट्स बहुत अच्छे थे जो उनको उन्होंने जवाब दे पाए. उनको मुझ पे कॉन्फिडेंस था, आई कैन से. एंड दूसरा बात, मैं सुनता भी नहीं था.
क्योंकि उनको मालूम था कि ये करेगा वो गलत नहीं है। और दूसरी बात, वो लोग सुनते थे पेरेंट्स को। जब कोई आके ऐसा बता जाता है ना, आपका बच्चे का नाम कल पेपर में आया है, ऐसा ऐसा उसने काम किया है, जबकि मेरे घर पे नहीं मालूम होता था, तब उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड और होता था। तो ये पॉजिटिव पार्ट जो सोसाइटी में से भी आती थी, और कुछ जो थॉट प्रोसेस वाले व्यक्ति थे वो इस तरह की चीजों को अप्रिशिएट करते थे। तो आई मस्ट से माय डैड वाज वेरी, आई मीन यू नो, इन इन अ वे ही वाज गिविंग मी लिबर्टी आल्सो। एंड मैंने करीब काम शुरू करने के 5 साल के बाद में आई गॉट मैरिड। सो तब तक मैं अपने लक्ष्य की ओर, मैंने डिसाइड किया था कि सबसे पहले या तो लड़की ले लो या तो नौकरी ले लो। तो उसमें मैंने चूज किया कि पहले मुझे नौकरी लेना है, जिसकी वजह से पहले मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, क्योंकि ये चैलेंजिंग, सही बात बोली आपने। मुझे तो प्रूव करना था, लेकिन साथ साथ में लोगों को भी प्रूव करना था कि ये चीज जो मैं कर रहा हूँ वो एक अलग है, और अलग होने के बाद में मैं मार्केट के अंदर इसको सस्टेन कर पाऊंगा। क्योंकि गवर्नमेंट से काफी प्रेशर था, लोगों से प्रेशर था, पंचायत से प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है। गांव के अंदर काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है। लेकिन हाँ, उस टाइमिंग में मैं ऐसे पत्थर लेके, अभी जैसे पर्स है वैसे मेरे पास में पहले पत्थर हुआ करते थे जेब में, और वो एक स्कूटर, बजाज का स्कूटर लेके मैं गांव में निकलता था। तो उस टाइमिंग में वो पत्थर इसलिए रखता था कि गाय बैल मेरे पीछे दौड़े ना। क्योंकि जैसे ही रोड, पहले आज जितने अच्छे रोड है मोदी जी की वजह से, ऐसे रोड पहले नहीं हुआ करते थे। तो वो गांव में जब हम जाते थे तब मेरी गाड़ी का साइलेंसर निकल जाता था, और जैसे ही साइलेंसर निकलता तो बहुत जोर की आवाज आती, और वो आवाज की वजह से जानवर पीछे दौड़ने लग जाते। तो ऐसी काफी सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके खुश होके और काम करने के लिए शुरुआत किया था। शायद उस टाइम पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, लेकिन हाँ, ये जरूर था, एक जुनून था, सोच थी, और उसकी वजह से पेरेंट्स को वी हैव कन्विंस दैट पार्ट। या यस। So a similar question to what she said. She mentioned about parents and society. I would ask you as an individual, because I have worked with fine artists and how lavish they are when they earn a very handsome money. So my question is that how did you persisted yourself to work for society? Because we all know that it is easy to say that let's contribute to society, but it's difficult to implement. So how did you maintain that? कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि money is also one thing that we want in our life. So how difficult was it for you? I'll say this is a really wonderful question because it is my hidden part. But I will, as I said, it is open for everyone. The way when ये पूरा जर्नी में ग्लैमर नहीं है, दोनों तरह से ग्लैमर नहीं है। और आपको ग्लैमर को देखना है, या आपकी नजरिए में वो ग्लैमर को लेके आना है। तो कई बार जब मेरे जब मैरिज हुए, तो उस टाइम पे लड़की के पापा को भी मालूम नहीं था कि मैं क्या करता हूँ। और देवर फ्रॉम द वेरी रिच फैमिली, वो बहुत बड़े बैकग्राउंड से है, उनका राजस्थान में बहुत बड़ा सल्तनत है। तो उन्होंने वहां से अपनी लड़की तो दे दी, और वो भी मुझसे पूछ के ये करते थे कि करते क्या हो आप। अब मेरे को जवाब देना मुश्किल होता था कि मैं करता क्या हूँ, क्योंकि न मैं डिजाइन भी करता हूँ, मार्केटिंग भी करता हूँ, ट्रेनिंग भी करता हूँ, फाइनेंस भी करता हूँ, माइक्रो फाइनेंस भी करता हूँ, और गांव में भी घूमता हूँ। और वो समझ नहीं पड़ता था कि ये करता क्या है बंदा। तो ये बात बरोबर है कि यानी जब हम पैसे के बारे में देखते हैं, और काफी सारे चीजों के बारे में जब सवाल आते हैं, और सर्वाइवल की जब बात आती है, तब ये चीज हिट होती है डेफिनेटली। एज ए ह्यूमन बीइंग ये जरूरी है। लेकिन आई अंडरस्टूड मेरी नीड कितनी है, एंड आई डू माई एनालिटिकल थॉट। मैंने बोला नॉलेज ओनली द आंसर ऑफ दिस पार्ट। जैसे मैंने बताया, लोगों को आज ही कमा लेना है, आज ही सब कुछ कर लेना है। क्यों क्यों कर लेना है? आपके पास नॉलेज कितना है, उसके लिए कोई दौड़ता ही नहीं है। आज सबको डिजिटल वर्ल्ड में शॉर्टकट चाहिए। आज आपको आज ही कमा लेना है, आज ही खा लेना है, आज ही पार्टी में जाना है, आज ही कपड़े पहन लेना है, आज ही सब कुछ कर लेना है। वो मेरे लाइफ में नहीं है। आई हैव डिसाइडेड, मेरे पास बहुत साल है। मैं आपको बताऊं, ये घटना जब हम दाहोद में रहते थे,
और उस टाइम पे रायट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए थे, और उस टाइमिंग में जब दाहोद में थे तब मैं आईआईटी था, मेरे कॉन्टेक्ट्स हमेशा आईआईटी, एनआईडी, नेफ्ट और इनके साथ में रहे हैं, मैं वहां पर पढ़ाता था। तो मैं आईआईटी जब पवाई बॉम्बे में गया और यहाँ पर मालूम पड़ा कि यहाँ पर राइट्स हुए हैं गोधरा में, तब वहां से मुझे फोन आया, पापा मुझे बोल रहे हैं, उस टाइम पे मैं फ्रेंच कट बियर्ड रखता था, तो मुझे फोन आया, अमिताभ बच्चन बाद में रखने लगे। सो उसकी उस टाइम पे मुझे फोन आया और बोलने लगे कि तू ये फ्रेंच कट रख रहा है, तेरे को यहाँ पर लोग कुछ और सोचेंगे और तू गोधरा के बीच में आएगा, तेरे को उड़ा देंगे। सच बात थी, माहौल इतना दर्दनाक था और भयानक था, लेकिन खतरों से खेलना तो हमने उसके पहले से शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने बहुत सारे इंसिडेंट गांव में ऐसे देखे हैं कि जहां पे हमको ऐसा लगता है कि भगवान के साक्षात्कार हमारे सामने हो रहे हैं। अब इससे बड़ी तो आपको क्या कोई चीज बता पाएगा, जब आपको लग रहा है कि आपका कंक्लूजन क्या है लाइफ का, आपको मालूम है कि मैं जिस जर्नी में निकला हूं उसमें आप परमात्मा से मिलने निकले हैं और वो आपको दर्शन दे रहा है किसी के रूप में आके। अब उससे बड़ी तो आप वापस से कहीं पे एग्जामिन, कहीं पे आपको वेरिफिकेशन तो चाहिए नहीं। तो जब ऐसी चीजें हो गई तब मैंने उनको एक ही बात बोली कि मैं आऊंगा, वापस से आऊंगा और कुछ भी नहीं होगा, एक बाल भी बांका नहीं होगा। और वहां से मैं जब बॉम्बे से निकला, दाहोद तक मैं गया, सिक्योरिटी के साथ घर तक मैं पहुंचा, कहीं से एक चीज भी बीच में मुझे नहीं आई और नहीं मुझे कहीं से किसी चीज को रोका गया। शायद ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ब्लेसिंग्स जो होता है ना, वो ऊपर वाले की तरफ से भी आपके पास होता है। मैं बोलता हूं तब मुझे मालूम नहीं होता है, बहुत सारी जगह पे मैं जाता हूँ, बातें भी करता हूँ, तब मेरे पास टॉपिक डिसाइड नहीं होता है, लेकिन माँ सरस्वती का आभास करता हूँ कि कहीं पे वो मेरे साथ है, कहीं पे वो मेरे साथ में बातें कर रही है, कहीं पे मुझे ये चीजें बोलने के लिए बता रही है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है। सेटिस्फैक्शन पैसे का मैंने देखा है, मैंने बहुत पैसे देखे हैं, पैसे वाले भी देखे हैं, और इतने पैसे देखे हैं कि ऐसा लगता है कि ये कोविड के टाइम की बात है, लोग ऐसे देख के बैग घूम रहे थे ऑक्सीजन के लिए, लाइफ बचाने के लिए, पर मैंने देखा पैसा किसी को बचा नहीं पा रहा। तो क्या चीज बचा रहा है? आज अगर उसकी सेंसिटिविटी आपको अर्ली एज में हो जा रही है, या आप जब पढ़ रहे हैं बचपन में तब आपको समझ पड़ने लग रहा है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ नॉलेज है और ऊपर वाले के आशीर्वाद है, जो आपको किसी अच्छे कार्य की ओर दौड़ाता है या वो करवाने के लिए बोलता है। तो ये एक ब्लेसिंग्स है, और फैसिनेटिंग डेफिनेटली। पैसा नेवर एंडिंग स्टोरी है, जितना भी आप कमाएंगे, लेकिन कितना अच्छे कार्य में आप खर्च कर रहे हैं। मेरा उसके लिए भी एक फंडा है, मेरे लिंक्डइन पे मैंने लिखा है, हमारे देश का हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए अगर अपने गांव में जाके, जहां पे उसका जन्म हुआ है, सिर्फ उतना डेवलपमेंट सेक्टर के लिए काम कर देना, हमको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। हमारे देश में इतनी ताकत है, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास इतना नॉलेज है। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में जाके सिर्फ आप 10 दिन निस्वार्थ भाव से उस गांव के लिए सेवा कर दीजिए। किसी किसान को पकड़ लीजिए, किसी फार्मर को पकड़ लीजिए, किसी दूध वाले को पकड़ लीजिए, किसी कॉबलर को पकड़ लीजिए और उसका बिजनेस प्लान बना के दे दीजिए, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी समझा दीजिए उसको। 10 दिन के अंदर उसका बिजनेस जो चेंज होगा, ये हमारे फाउंडेशन में हमने शुरुआत किया है। वी आर शेयरिंग द पीपल, वी आस्क इनवाइट द प्रोफेशनल्स एंड वी जस्ट ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी विदाउट एनी। आपको टिफिन अपना लेके आना है, ट्रैवल अपना करना है और कंट्रीब्यूट सोसाइटी में जाके करना है। सो ये छोटे 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 चीजें हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए इसके साथ में, और यू विल गेट द डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन। So this was really inspiring. What if I sum up the entire discussion which we were having with him? Three things are critical here. First, knowledge. Then the most important comes out to be the self-realization, and then self-confidence. If you have these three things, and then you have empathy, true to yourself, etc., you could easily achieve the impossible. That's for sure. Thank you for your time. Thank you. I'm sure that we must be all inspired here. And in return, normally we would like to facilitate our guests for that time which they have given us in our inspiration. To facilitate them, I would like to bring out our old two members who will do it. So on the stage, I will first request Mrs. Unnati Desai to come on the dance. And I will request Gitanjali.
That is such a great honor for me. Madam, you just inspired each and every corner. So great, so great. You are really inspiring. Fantastic. मेरे दिल और दिमाग में आप एंड सिसोदिया सर दोनों आज से you two are inbuilt in my soul. Thank you. Goody, family, and thank you all. Thank you so much. आपको भी हम आप तीनों ने प्रूव कर दिया कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा Now I would like to invite our second speaker, Mr. Ranveer Sisodia. To felicitate, I would like to invite our own Dr. Because indeed so inspiring. In fact, we had I'm privileged to listen to you. And so it's such an inspiring story. We today had two facets. One was ambition, another was the passion. Yeah. If something the world is going after one person impact, I think they will change. I'm sure. Yeah, I'm truly inspired. Thank you. Wonderful. Wonderful. And such detail we have never found. We hear a lot of interviews, but nobody goes into so detailed so that we know how difficult it is. Thank you. And as a surprise, we would like to facilitate, I forgot his name. Yeah, Kaushal. Mr. Kaushal, and I will request our president to do that. आप चलो आपको अच्छा लगा था बहुत ही हम बहुत लोग ही अच्छा मैं अपने आप को पहले अकेला फील करता था अभी अकेला फील करता हूं कि प्लस बेसिकली प्लस मल्टीप्लिटी क्योंकि मेरे पैर की प्रॉब्लम बढ़ता रहा है मेरी लाइफ में और हमारी फर्स्ट मुलाकात रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और बहुत ही कहते हैं ना कि हर एक गुरु को एक शिष्य की तरह से भी शिष्य को गुरु की होती है गाँव दोनों बने के शिष्य की आप हम सबके बहुत प्रेरणा दी है मतलब आपसे इतना प्रोत्साहन मिला है तो और एक प्लेजर था इसका थैंक यू सो मच फॉर हमारे साथ आप सब मिलोगे तो इसका आपको कंपल्सरी पालन करना पड़ेगा फिर रुकना मना क्या है अभी सब लोग आपके लिए फिर से एक बार तालियां बजाएंगे थैंक यू थैंक यू So thank you. Thank you to our esteemed guest speaker once again, normally for inspiring us. I'm sure everyone must be inspired. Now let's go to the fun part. And for that, I would like to share the dice with our president Toastmaster Jyoti.
Thank you, Yogesh. Thank you, everyone. Thank you, esteemed guests and PM Yogesh for taking the session and the audience. Uh, there are few people waiting online since long, so I have a surprise for few members. गेस्ट आपको ये चीज पता नहीं होगी तो मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ VTM started 7 years back. So हर एक टेन्योर में एक प्रेसिडेंट और एक्सकॉम कमिटी होती है जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पूरा मीटिंग एंड क्लब का आगे बढ़ाने का. तो मैंने ऐसा सोचा था कि we have completed 7 years and it's a 300 meeting. So all including me there are 11 presidents. तो मैंने ऐसा सोचा था कि सारे 11 presidents should be a part of this event. And luckily, online, offline, I'm able to gather them together. So, they are waiting since long. हम थोड़ा late हो गए, तो इसलिए मैं चाहती थी कि आप इस सेशन का हिस्सा रहे और आप लोगों के साथ हम वो जर्नी शेयर करें. So, मैं request Ravi, Dipankar is there, our first president. I request everyone in a chronological order. Then we'll start with the address of Dipankar, TM Dipankar. Dipankar, are you there? Yeah, I think I am online behind you. Am I audible and visible? Remove the background blur effect. Okay, there is some problem here. Just a second. Okay, just a minute, Dipankar. You see Yeah. me now? Okay, Dipankar, you have to speak again. There was some technical glitch. Just be there. I'll invite the offline. Can you all hear me, see me, and Yeah, we want you to be there on your camera. So I request the offline presidents, I'll call them by their order, to be there, here on the stage. P. Prunal. Team Yogesh. Team Tarun. And I'm the last president. So now we will start the address from TM Dipankar. Dipankar, are you there? yes, I am with you. So Dipankar is the first president of VTM. Dipankar, most welcome. Thank you so much, Jyoti, and all thanks to Jyoti. Without her, she has been relentless in her efforts to, I think, get all of us together. But I could see similar faces: Hiren, Kirit sir, Kunal, Gitanjali ma'am. But I am happy to see unfamiliar faces because this talks about the success of VTM, the lives that we have been able to touch. So, hello everyone. More than a president or the first president, I would like you all to treat me as a member of VTM. Today is both nostalgic and emotional for me. And not only me, with me, there were a lot of others because of whom this club took shape. And in taking shape, it has touched a lot of lives. And I think that is the biggest success for the club. Through 300, I am sure that we have touched more than 3,000 lives. And I think that's the success of VTM. And as a leader, a most important learning that I got from this club, I had decided today that I will speak less of learnings. But one very important learning that I got as a leader, it is never about you. It's about the people who follow you. It's about the people you are serving. So I think that motto somewhere has
stuck with VTM, because of which the dream of it being a diamond club again and again is being realized. The fact that members are getting benefit from it. Well, there are a lot of stories about VTM, how it took shape, but I will not share those today. As Jyoti has invited me to be part of the club next time I'm in Baroda, I will keep that promise. And with my family, which is the VTM family, I will share those stories. So for me, VTM is like a child that was nurtured. I was fortunate, a stroke of luck, to be a part of it as a member. And with all the members here, keep building this club. Let this club be an epicenter of helping others evolve through their communication journey and thereby their leadership journey. Thank you so much, everyone. I'm really eager. Unfortunate that I'm online. I don't feel good. This club used to be every Sunday routine for me, every alternate Sunday routine for me. But let me tell you, what I gave, the club gave me 200%. I say 1,000% more than what I have given to the club. Minuscule what I have given to the club. So this club will give to everyone, and best wishes to all of you with the motto of Toastmasters, just live to it and give us back many, many more. Thank you so much. Back to you, Jyoti. Big round of applause for our first president. Thank you so much, Dipankar. Thank you so much for your patience. He was waiting since last 1.5 hours. He is having a meeting. So thank you so much. Next president is TM Sapna. She is in Australia. I'm able to get her audio message for everyone. Ravi, can you help to play that message? Sapna was our second president, and right now she is in Australia. And she's traveling, she's on vacation, but somehow she managed to share the audio message. Good morning, everyone. Most of you may not know me, but I know the club very well. Believe me when I say that words fall short in expressing how thrilled I am to hear about this huge feat. Congratulations to everyone at Vadodara Toastmasters Club on reaching the milestone of 300 meetings. This is a mammoth achievement, which I'm sure couldn't have been possible without its members and relentless efforts of the executive committee, past and present. I have witnessed firsthand what it takes to organize every single meeting, and reaching here is a huge triumph. Having seen the club in its budding stages, I'm proud of how well it has done. I wish you all the best for many hundreds of more meetings to come. Hope you all have a great celebration and a wonderful day. Big round of applause. Next president is TM Vikram. He is our member, but due to commitments, he could not attend the meeting, so he shared the video message with us. Right. Ravi, can you
and Sanjay. Hi, am I audible? Yes. Oh, hi. Oh, hi, guys. Happy evening, everyone. Yeah, hope the old members got a nostalgic trip towards that line. But nice of you to invite me. Nice of that I could make it. Unfortunately, I'm stuck in the middle of Bangalore traffic, so I'm just talking to you from my car. Anyways, it was nice connecting with you. It was nice seeing the entire team, the new team as well. Jyoti, good to hear from her after a long time. I conducted the 100th meeting. I was there for the 200th. Now I am there for the 300th also. So it is a wonderful journey. And rather than me being part of VTM journey, I think VTM has been part of my growth as well. That is the most important thing that VTM has done to me. Definitely, I'll come to some of the meetings whenever I can and whenever I'm in Baroda. And it's good to see the lot of familiar faces. And just like Dipankar said, it's good to see a lot of new faces as well. That means the club is growing, and every time. Hope to see you all soon. Okay, enjoy the 300. President is C.N. Pushkar. He is there online. C.N. Pushkar. Good evening, everyone. Am I audible and visible? Yes. It is indeed real pleasure for me to attend the 300th meeting. I joined this VTM club on the very first anniversary of the club, and the very same day I joined it. And then I attended the 100th meeting, 150, 200, 250, and 300 is giving me a real pleasure. It is always said that a good club is that which has a lot of strength, and this club indeed has some pillar strength. There are some founding members who are still containing, and that is the secret behind the success of the club. I can see Toastmaster Gitanjali, Kirit sir, Krunal, Hiren, and then the C.N. Pushkar. If you can conclude in 30 seconds, we left you in between. good evening once again. I don't know from where you could not hear me, but it is like the same feeling. I hope you are able to hear me now, right? Yes. It is giving the same feeling when the evaluator tells you to repeat your second speech once again. And this is Toastmaster, so we are prepared for all such technical glitches, especially after the COVID era. So what I was trying to tell that I have attended all the celebrations of 100, 150, 200, 250, and this 300 is something really special for me because all these days I am with Vadodara Toastmasters Club. This club is not only a club of people, it's a family, and this family has some pillars which have stood the test of time. What I was trying to tell earlier was I can see Toastmaster Gitanjali, Kirit sir, Krunal, Hiren. They are right from the beginning, and they have stood with the club, just like the elder people in the house, how they guide you,
and how they treat all the family members, and together we can achieve success as a family. So Vadodara Toastmasters Club is indeed very much beneficial in terms of having very strong membership strength. When I was about reading about what is exactly 300 as a number means, so 300 as a number is called as an angel number, and 300 is one number which is very powerful and meaningful, which gives you a message in terms of spirituality that you should trust your intuition. And this particular number sequence signifies that you are on the right path, and that your thoughts, your directions, your feelings, and instincts are all directed towards the right path. So, by attaining this 300, we are all, as fellow Toastmasters, all are on the right path of learning. So, my heartfelt thanks to all of you, and kudos to Vadodara Toastmasters Club for achieving this new milestone, and hope we achieve much, much more than this. Thank you, Jyoti, for inviting me, and thank you once again to all the Toastmasters Club, Vadodara Toastmasters Club members. Congratulations to each one of you. Thank you, PM Pushkar. Big round of applause for PM Pushkar. I am the 11th president of Vadodara Toastmasters Club, and मैं ये एक्सपीरियंस अपनी मातृभाषा में शेयर करना चाहती हूँ, राष्ट्रभाषा में. लाइक उन्नति मैम सेड दैट nothing, no language is better than your mother language, and I will share something personal. मैंने ऐसा फील किया है कि टोस्ट मास्टर्स के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो भगवान बहुत अच्छे से समझते हैं. It was evidently seen twice. Last time Gitanjali we were asking for Gavel and we were searching for here and there, and the correct time Gavel was gifted to us from the district level, and we only ExCom team knows that हमने कितना effort किया था उसके लिए. तो वो एक कहाँ से my wish will मेरा wish पहुंच जाता है और वो पूरा हो जाता है. And I said today's experience, it was my wish that all the 11 presidents should be there in this event. I was trying since last 1 month, and Sapna, who is in Australia, उनका message नहीं आ रहा था. I mean, we were not able to connect them, so I was very upset. And I was thinking that कैसे भी उनका message आ जाए and the circle get complete. And then I messaged Vikram that if you can try. I also messaged her. He messaged twice. And she's in vacation. Somehow she saw the message. And today morning, I mean, at 8 o'clock, she shared the voice message. And this is for Adil also. 12 o'clock, he shared the message. So I felt that my connection with VTM, वो हमेशा भगवान समझ जाते हैं, जो मेरी विश होती है पूरी हो जाती है. So and as a president and as a member, I always wish that, I mean, I consider VTM as my family, and when I say family, I consider all of you as my family member. And मैं चाहती हूँ कि VTM आगे बढ़ता रहे, यहाँ पे सब अपने सपने पूरे करें, और जो भी लोग आके अपने पैशन को पूरा करें, ऑर्डिनरी हाइट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट तक पहुंचे. And thank you everyone for this experience, and all of you for making this event successful. Thank you so much. Let's give a big round of applause for our guests, Unnati and Ranveer. We'll be having a break, short tea break for 5 minutes. After that, we'll have a game session, and then a refreshment is there. So while this break is there, we have a cheat is there. Where it is? Okay, so all of you can collect cheat from TM Hiren. It's a surprise what it is. You can become a crorepati also. TM Hiren is there, so anything is possible. So just my request is just collect that cheat. Don't open that. We'll open it in a game session. So we are having a 5 minutes break now. Thank you so much.